Hey everyone and welcome to our another video. This is all about the today's IELTS speaking test review. As we promised earlier that we are going to start this daily IELTS speaking test reviews and from today we are going to begin the same. So कुछ दिनों पहले ही हमने इस चैनल पर बताया था कि हम डेली की जो स्पीकिंग टेस्ट रिव्यूज़ इस चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट करेंगे एंड फ्रॉम टुडे हम वही चीज़ हम आज से शुरू कर रहे हैं एंड इट इज़ द डे फर्स्ट ऑफ द स्पीकिंग टेस्ट रिव्यू. हमारी एक कैंडिडेट ने अपना IELTS का स्पीकिंग एग्ज़ाम दिया एंड ही शेयर कि क्या इंट्रो क्वेश्चंस थे, क्या फॉलोअप थे, क्या क्यू कार्ड थे. सो यू विल कम टू नो अबाउट इट एंड इफ़ यू और एनीवन इन योर नोन हैज़ गिवन हिज और हर IELTS एग्जाम तो आप भी जो आपके क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम में पूछे गए हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी कैंडिडेट्स को हेल्प मिलती रहेगी. बिकॉज सबको एक ना एक ऐसा आइडिया चाहिए होता है कि उनको पता चल जाए कि दूसरे कैंडिडेट को स्पीकिंग एग्जाम में क्या पूछा गया. सो वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉलोअप क्वेश्चन फॉर द लेटेस्ट क्यू कार्ड एंड अ लॉट मोर कंटेंट. सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. So I'll begin with the part 1. So part 1 में जो questions थे, the questions for part 1 were usually you can say typical IELTS exam, like they just ask for your ID and like your full name and how I can call you. So after this they ask that is your hometown a good place to live, and then do you think your hometown is a good city for young people to live in. And then the part 1 topic started, that how do you feel about pets. Then like they started asking questions about pets. How do you feel about your pets? Do you have a pet? Would you like to have a pet in the future? And if yes, if you start that yes I would like to have, make sure that never give them answer never give them negative answer that no I don't like pet, because then they will say that why you don't like, but they said her like why you want to have a pet in the future. So these kind of questions they can ask, but make sure to give positive so you can answer in a better manner, right? Because you can make more points for a positive thing rather than a negative thing, in my opinion. And the next question was, which pet would you prefer, like which, if you want, they asked that would you like to have a pet in the future, and then she said yes I would like to have, and why, she given the reason. And then they asked that which pet would you prefer in future if you want to have a pet. So these were the part 1 questions, and the cue card was, describe your experience of moving to a new school or new city. Please say where you moved to, why you moved there, how you felt about moving, and explain how this experience affected your life. तो क्यू कार्ड था कि किसी न्यू स्कूल में आपने मूव किया, न्यू सिटी में मूव किया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था. एंड इन द क्यूज़ वहाँ पूछा था कि वेयर यू मूव टू, आप किस सिटी में किस स्कूल में आप मूव किए, वाई यू मूव देयर, क्या रीज़न था, हाउ यू फेल्ट अबाउट मूविंग, आपको वो कैसा लगा, एंड एक्सप्लेन हाउ दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड योर लाइफ, एंड उस चीज़ का आपके लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ. दैट वाज द क्वेश्चन. एंड इन जो भी ये रिव्यूज आई वुड से क्वेश्चंस हैं, इनके हम सैम्पल आंसर स्पेशली फॉर दिस क्यू कार्ड भी अपलोड करेंगे. सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इस वीडियोज़ की अपडेट की. And then the last there was follow-up questions, and the follow-up questions were regarding the same thing as usual it is. And it was, why do you think people change their place of residence. तो आपको क्या लगता है कि जो लोगों के प्लेस होती है, रेजिडेंस प्लेस होते हैं, वो क्यों चेंज करते हैं. तो कुछ भी हो सकता है, लाइक इफ समवन यू आर वर्किंग एट अ प्लेस एंड यू आर डूइंग अ जॉब एंड आपकी ट्रांसफर हो जाती है, देन यू हैव टू चेंज द सिटी, और यू आर लिविंग इन अ रूरल एरिया और लिविंग इन सम अदर एरिया, एंड डू यू हैव एनी प्रॉब्लम और ड्यू टू एनीथिंग यू वांट टू चेंज योर प्लेस, you can. नेक्स्ट वॉज, what effect does relocation have on children. तो बेसिकली अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो उसका चिल्ड्रंस पर क्या इफेक्ट होता है. दैट वाज अ क्वेश्चन. हाउ डू यू थिंक द relationships people have at work affect their relationships in a family. Next was, what kind of relationships do you have with your colleagues, and the last was, would you like to change your workplace. So these were the follow-up questions. So it was the end of the speaking test review for the day 1, and we will back with the day 2 speaking test review. And make sure if you or someone in your known has taken their speaking test and you know the questions, or you want to share any of the other questions, then do let us know and do share in the comment section. That will help other candidates as well. And make sure to subscribe and turn on notifications so you will get the latest update for our next video. That is all. Thank you for watching. We'll meet you guys in the next one.